Here video lecture we discuss about the concepts, three concepts, that is job analysis, job description and job specification. Now in this video lecture we discuss about meaning of recruitment, definitions of recruitment and sources of recruitment. Okay, so let's start with the meaning of recruitment. Recruitment is a positive process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. When more persons apply for jobs, then there will be a scope for recruiting better persons. The job seekers too, on the other hand, are in search of organizations offering them employment. Recruitment is a linkage activity bringing together those with jobs and those seeking jobs. In simple words, the term recruitment refers to discovering the source from where potential employees may be selected. The scientific recruitment process leads to higher productivity, better wages, high morale, reduction in labor turnover, and enhanced reputation. It stimulates people to apply for jobs. Hence, it is a positive प्रोसेस. पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का हायर प्रोडक्टिविटी को लीड करता है, बेटर वेजेस को लीड करता है, हाई मॉरल, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर एंड रेपुटेशन जो है वो ज़्यादा करता है, एनहांस करता है. ठीक है. Then recruitment is concerned with reaching out, attracting and ensuring a supply of qualified personnel and making out selection of requisite manpower, both in their quantitative and qualitative aspect. It is the development and maintenance of adequate manpower resources. This is the first stage of the process of selection and it's completed with placement. ये फर्स्ट स्टेज है प्रोसेस का, सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू रिक्रूटमेंट, एंड एंड का होता है, कंप्लीट कहाँ पे होता है? प्लेसमेंट की. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी discuss about the various definitions of various act authors. Okay, so let's start with the first author according to Edwin B. Flippo. It is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. He further elaborate it terming it both negative and positive. कैसे करते हैं? वो निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है ये रिक्रूटमेंट का. तो वो बताते हैं, ही सेज इट इज़ ऑफन termed positive in that it stimulates people to apply for jobs to increase the hiring ratio, that is the number of applicants for a job. Selection on the other hand tends to be negative because it rejects a good number of those who apply or leaving only the best to be hired. Okay, मतलब पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट्स करता है पीपल को. और निगेटिव क्यों है? क्योंकि उसमें से जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं पीपल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें से सबको तो नहीं ले सकते, तो कोई गुड नंबर ऑफ दोज हु अप्लाई एंड बाकी के जो है उनको रिजेक्ट करते हैं. तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है. ठीक है. इन द वर्ड्स ऑफ डेल योडर ने कहा है, recruitment is the process to discover the sources of manpower to meet the requirements of the staffing schedule and to employ effective measures for attracting that manpower in adequate numbers to facilitate effective selection of an efficient working force. Okay, recruitment क्या कहा गया है? प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस? डिस्कवर द सोर्सेस ऑफ मैनपावर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टाफिंग शेड्यूल. जो मैनपावर की ज़रूरत है उनको फिलअप करने के लिए, एंड टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स फॉर अट्रैक्टिंग that manpower in adequate numbers
to facilitate effective selection of an efficient working force. Okay. कैम्पनीर जो है वो भी डेफिनेशन करते हैं, देखते हैं हम कैम्पनीर की डेफिनेशन. रिक्रूटमेंट forms the first stage in the process which continues with selection and ceases with the placement of the candidates. ओके तो कैम्पनर जो है उन्होंने क्या कहा है, बहुत अच्छी और सिंपल डेफिनेशन जो है वो की है उन्होंने. रिक्रूटमेंट फॉर्म्स द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोसेस. ये प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है रिक्रूटमेंट, विच कंटिन्यूज विद सिलेक्शन, उसमें से सिलेक्ट होते हैं, एंड सीजेस मीन्स एंड होते हैं विद द प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट. ओके. In personnel, recruitment management tries to do far more than merely fill job openings. As a routine, the formula for personnel recruitment would be simple, that is just fill the job with any applicant who comes along. Okay. और एक डेफिनेशन है जोसेफ जे फेमुलारो की. ओके, वो क्या कहते हैं, however the act of hiring a man carries with it the presumption that he will stay with the company, that sooner or later his ability to perform his work, his capacity for job growth, and his ability to get along in the group in which he works will become matter of first importance. ओके. फेमुलारो ने क्या कहा है कि ये एक एक्ट है, मैन हायरिंग अ मैन को हायर करने की, विथ इट इज़ प्रिजम्पशन. एक प्रिजम्पशन होता है. क्या प्रिजम्पशन होता है कि वो अच्छा काम करेगा, वो अच्छा परफॉर्म हिज वर्क. ओके, उसमें वो एबिलिटी है, लेकिन वो कब करेगा, रिक्रूट होने के बाद. His capacity for job growth and his ability to get along in the group in which he works will become matter for first importance. Because of this, a critical examination of recruitment methods in use should be made, and that is the purpose of this chapter. Okay, so we have completed the meaning and definition of recruitment. Okay, so let's start with the sources of recruitment. Okay. The candidates may be available inside or outside the organization. Basically, there are two sources of recruitment, that is internal sources and external sources. Okay, internal sources उसमें भी सब पार्ट्स है, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, उसके थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, then educational institutions, then recommendations of existing employees, then factory gates, casual callers, then central application file means data banks, वहाँ पे स्टोर कर रहे हुए होते हैं एप्लीकेशंस, उसमें से मंगाते हैं. then labor unions, labor contractors, former employees and other sources. ये सभी के यहाँ पे नहीं आए, वो अदर सोर्सेस में आते हैं. ये होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, सो हम फर्स्टली एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे इंटरनल सोर्सेस के बारे में. बेस्ट एम्प्लॉयज कैन बी फाउंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन अ वैकेंसी अराइजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट मे बी गिवन टू एन एम्प्लॉय हु इज ऑलरेडी ऑन द पेरोल. ओके, सो मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्क करता है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे पास एक ऐसा एम्प्लॉय है कि जो ये जॉब के लिए सूट है. ओके, इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड प्रमोशन, ट्रांसफर एंड इन सर्टन केसेस डिमोशन ऑल्सो. व्हेन अ हायर पोस्ट इज गिवन टू अ deserving employee, it motivates all other employees of the organization to work hard. The employees can be informed of such a vacancy by internal advertisement. कंपनी जो है वो इंटरनली एडवर्टाइज करती है कि वैकेंसी है करके, तो जो प्रेजेंट वर्कर है, जो पेरोल पे वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अप्लाई करते हैं और फिर वैकेंसी के लिए उनको सिलेक्शन हो जाता है उनका. ओके, सो इसको कहते हैं इंटरनल सोर्सेस. उसके टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे हम.
डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट है ट्रांसफर्स. ट्रांसफर इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ पर्सन्स फ्रॉम प्रेजेंट जॉब to other similar jobs. Okay, these do not involve any change in rank, responsibility or prestige. The numbers of persons do not increase with transfer. ट्रांसफ़र की वजह से कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि वो इंटरनली शिफ्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, शिफ्ट होते हैं उन्हीं. Then promotions. Promotion refer to shifting of persons to position carrying better prestige, higher responsibilities and more pay. Okay, ट्रांसफ़र में सिर्फ शिफ्ट जो है वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हैं. प्रमोशन में उनको ऊपर की पोजीशन दी जाती है. ओके, बेटर प्रेस्टीज, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मोर पे. ओके, द हाइएस्ट पोजीशन फॉलिंग वैकेंट मे बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जो वैकेंट हो जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन में ही किसी के साथ ट्रांसफ़र करके फिलअप की जाती है. अ प्रमोशन डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि प्रमोशन में भी नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज नहीं होते हैं. ठीक है. अ पर्सन गोइंग टू गेट अ हायर पोजीशन विल वैकेंट हिज प्रेजेंट पोजीशन. प्रमोशन विल मोटिवेट एम्प्लॉयज to improve their performance so that they can also get promotion. Okay, and third one is internal sources में third one है present employees. The present employees of a concern are informed about likely vacant positions. The employees recommend their relatives or persons intimately known to them. Management is relieved of looking out prospective candidates. The person recommended by the employees may be generally suitable for the job because they know the requirement of various position. कंपनी के एम्प्लॉय को मालूम रहती है कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो किसके लिए है और कौन सा सुटेबल एम्प्लॉय है वो उसमें सूट कर सकता है. The existing employee take full responsibility of those recommended by them and also ensure of their proper behavior and performance. Okay, so जो उनको रेफ़र करता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उसका बिहेवियर कैसा होगा और उसका परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होगा. ठीक है. देन हम देखेंगे अभी एक्सटर्नल सोर्सेस. All organizations have to use external sources of recruitment to hire positions when existing employees are not suitable. Okay, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो सूट नहीं करते उस पोजीशन के लिए, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल सोर्सेस फॉर रिक्रूटमेंट का सहारा लेना पड़ता है. ओके, मोर पर्सन्स आर नीडेड व्हेन एक्सपांशन आर अंडरटेकन. ओके, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपांशन होने वाला है और एक अलग नया प्लांट सेटअप करना है तो वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज की रिक्रूटमेंट जो है वो होती है. ओके, मेथड्स हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के. फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट सोर्स है थ्रू एडवर्टाइजमेंट. इट इज़ अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर स्किल्ड वर्कर्स, क्लेरिकल एंड हायर स्टाफ. Advertisement can be given in newspapers and professional journals. These advertisements attract applicant in large number of highly variable quality. Okay, so preparing good advertisement is a specialized task. If a company wants to conceal its name, a blind advertisement may be given asking the applicant to apply to postbag or postbox number. ओके, और टू सम एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि उसके थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू होता है. सेकेंड वन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन इंडिया आर रन बाय द गवर्नमेंट फॉर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, क्लरिकल पोस्ट एट्सेट्रा. इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. In certain cases, it has been made obligatory for the business concerns to notify their vacancies to the employment exchange. In the past, employers used to turn to these agencies only as a last resort. The job seekers
and job givers are brought into contact by the employment exchange. वो contact करते हैं और उसमें से जो भी applications हैं वो suitable है तो वो लेते हैं वो applications और recruitment की procedure start हो जाती है. थर्ड वन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. Okay, so direct recruitment from educational institutions for certain jobs, that is placement, which require technical or professional qualification, has become a common practice. A close liaison between the company and educational institutions help in getting suitable candidates. The students are spotted during the course of their studies. Junior level executives or managerial trainees may be recruited in this way. Okay, तो प्लेसमेंट के बारे में आपको पता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट होते हैं तो उसके थ्रू ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है. नेक्स्ट वन है रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ नो बोथ द कंपनी एंड द कैंडिडेट being recommended. Hence, some companies encourage their existing employees to assist them in getting application from persons who are known to them. Okay, जो उनके कांटेक्ट में है, उनको जिनको ज़रूरत है उनको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं. ठीक है. इन सर्टन केसेस रिवॉर्ड्स में ऑल्सो बी गिवन इफ कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय देम आर एक्चुअली सिलेक्टेड बाय द कंपनी. इफ रिकमेंडेशन leads to favoritism, it will impair the moral of employees. ठीक है. नेक्स्ट है फैक्ट्री गेट. Certain workers present themselves at the factory gate every day for employment. This method of recruitment is very popular in India for unskilled or semi-skilled labor. The desirable candidate are selected by the first line supervisor. The major disadvantage of this system is that the person selected may not be suitable for the vacancy. मतलब वो सूट करता है या नहीं सूट करता ये जब अपॉइंटमेंट होता है तभी पता चलता है. लेकिन ये इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड इन इंडिया. ओके. देन कैजुअल कॉलर्स. Those personnel who casually come to the company for employment may also be considered for the vacant post. It is the most economical method of recruitment. In the advanced countries, this method of recruitment is very popular. Casual callers जो कॉल करते हैं, जो पूछते हैं कि वेकेंट है आपके पास पोजीशन तो उसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ में ये मेथड रिक्रूटमेंट की पॉपुलर है. देन नेक्स्ट है सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल. ओके, मीन्स डाटा बैंक्स. A file of past applicants who were not selected earlier may be maintained. In order to keep the file alive, applications in the file must be checked at periodical intervals. मतलब जिन्होंने पहले भी एप्लीकेशन दिया है तो वो एप्लीकेशन स्टोर रहता है डाटा बैंक में, फाइल में. हाँ, तो वो एप्लीकेशन फाइल निकालते हैं और उसमें से सूटेबल कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन पर्पस के लिए. ठीक है. देन नेक्स्ट है लेबर यूनियंस. इन सर्टन ऑक्यूपेशंस लाइक कंस्ट्रक्शन, होटल्स, दैट इज मैरीटाइम इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा, इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज इनस्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे मतलब वर्कर्स जो है वो टिक नहीं पाते ना, इनस्टेबिलिटी है. ऑल रिक्रूट्स यूजुअली कम फ्रॉम यूनियंस. उनकी यूनियन रहती है उसमें से वो आते हैं. इट इज़ एडवांटेजियस फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट सेव्स एक्सपेंसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके. हाउएवर इन अदर इंडस्ट्रीज यूनियंस मे बी आस्क्ड टू रिकमेंड कैंडिडेट आइदर एज अ गुडविल gesture or as a country towards the union. Next one है labor contractors. This method of recruitment is still prevalent in India for hiring unskilled and semi-skilled workers in brick clean industry. जहाँ पे आपण म्हणतो ना विटा जिथे बनतात भट्टी है ना, तिथे हे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहेत त्यांच्या थ्रू रिक्रुटमेंट पॉप्युलर आहे. The contractors keep themselves in touch with the labor and bring the workers at the places where
they are required. They get commission for the number of persons supplied by them. Okay. Next है former employees. Former employees means in case of employees have been laid off or have left the factory at their own, they may be taken back if they are interested in joining the concern. Okay, मतलब वो खुद पे छोड़ के गया है और उनको फिर ज्वाइन करना है, ऐसे होते हैं फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की, वो फिर से इस प्रोसीजर में आते हैं. ठीक है. And last one है other sources. Apart from these major sources of external recruitment, there are certain other sources which are exploited by companies from time to time. These include special lectures delivered by the recruiter in different institutions. Through apparently these lectures do not pertain to recruitment directly. Then they are video films which are sent to various concerns and institutions so as to show the history and development of the company. These films present the story of company to various audience, thus creating interest in them. Various firms organize trade shows which attracts many prospective employees. Many a time advertisements may be made for a special class of workforce, okay, who worked prior to their marriage, okay, especially ladies के लिए. These ladies can also prove to be very good source of workforce. Similarly, there is a labor market consisting of physically handicapped also. Visit to other companies also help in finding new sources of recruitment. Okay, so student, I hope you understand this lecture. If you have any query, then message me in my comment box. See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.